Nostalgia is an unusual emotion. It does not merely bring back the past, it reshapes our present and softly integrates it into our current lives. Nostalgia in cinema is basically a shortcut to emotion, जहाँ आपको नई स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैरेक्टर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक familiar टाइटल, एक ओल्ड सॉन्ग जो आपको पास्ट मेमोरीज में ले जाए, एंड एक आइकॉनिक डायलॉग that people remember by heart. And boom, people are gonna come in numbers in the theater. And that is why आजकल नॉस्टैल्जिया एक स्ट्रेटजी बन चुका है टू सेल मीडियोकर सीक्वल्स ऑफ क्लासिक फिल्म्स एंड अर्न इजी मनी. चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड या एनी अदर पॉपुलर इंडस्ट्री, everyone is making sequel of old classic films. They are manufacturing comfort and selling you a feeling you already trust. Because nostalgia works like a filter. It edits out the flaws, it amplifies the highs, and it replaces the actual film with the version you remember. So you are not craving for the movie. Actually, you are craving for that time in your life when you watched the classic and now you want to relive that again. एंड जब सिनेमा एक मेमोरी प्रोडक्ट बन जाता है तब क्लासिक स्टॉप बीइंग आर्ट एंड टर्न इनटू सम काइंड ऑफ ब्रांड्स. कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी. जब एक फिल्म क्लासिक बन जाती है देन इट बिकम अनटचेबल. यू कांट क्रिटिक इट नॉर्मली लाइक अदर फिल्म्स because some people don't take the criticism as, oh, you don't like this film. Rather, they take it as, you didn't like an important part of my childhood. एंड उसी वक्त वो फिल्म आर्ट के साथ साथ एक आइडेंटिटी भी बन जाती है. इट बिकम्स अ पर्सनल मेमोरी दैट पीपल डिफेंड लाइक अ फैमिली मेंबर. एंड दैट इज व्हेन ऑनेस्ट क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग डाइज. बिकॉज आगे चलकर उस क्लासिक फिल्म का जब भी सीक्वल आएगा द प्रेशर ऑन द फिल्म मेकर विल नॉट बी टू मेक अ ग्रेट फिल्म जो एक्चुअली में होना चाहिए, बट द प्रेशर बिकम्स टू नॉट डिसरिस्पेक्ट द इमोशन ऑडियंसेस हैव फॉर दैट ओरिजिनल फिल्म. So the writers stop taking risks, directors stop experimenting, and the film turns into a safe, nostalgia-filled project. Let's take Border for example. क्योंकि second part of this classic war film is releasing soon, and maybe आप ये वीडियो देखेंगे तब तक फिल्म रिलीज भी हो चुकी होगी. So Border is an epic war drama film directed by J.P. Datta, starring Sunny Deol, Sunil Shetty, Jackie Shroff, Akshay Khanna, and many others. ये फिल्म डिपिक्ट करती है the war between India and Pakistan that happened in 1971. And this film became a cult classic due to the grounded approach, intense and realistic war sequences, and iconic dialogues and songs like Sandesi Aate Hain. For a lot of people, Border is not just a movie, it is a ritual. It is that film that you have seen 100 times in bits and pieces on TV. And even today, if you enter the room and this film is playing, you instantly know which scene is playing. Border के songs, dialogues and vibe हमारी collective memory का एक part बन गए. And when something becomes a part of our collective memory, you stop seeing it as a film with choices and start seeing it as a time machine because you want to relive that moment again and again. Once more. So when Border 2 got announced, makers wanted audience to come back for that feeling, to relive that era, and to become who they were when they first watched Border. Basically, Border 2 is not a sequel, it is a reunion episode. And reunion episodes have a problem that they are made to trigger emotions and not to tell the truth. But अब तक सब सुनकर लग रहा होगा nostalgia is good. But टाइटल में तो लिखा है nostalgia ruins sequels of classic films. So how? Let's find out. जब एक क्लासिक फिल्म का सीक्वल बनता है तो द फिल्म मेकर और द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म बिकम्स ऑब्सेस्ड विद आइकॉनिक सीन्स to retain the nostalgia of original film. So they constantly tries to recreate the same beats, same emotional build-up, same music cues and same vibe. And by doing this, film अपनी originality को खो देती है and it feels like you are just watching references of that old film. Instead of fresh, new writing scenes, the film starts writing checklist like where do we put the goosebumps moment या फिर how can we force that patriotic urge. And honestly, that's not storytelling, it is just reverse engineering of nostalgia. This reverse engineering turns new characters into accessories. They are not people anymore, rather they are just placeholders. Basically, new version of that old archetype. ना ही उनकी अपनी कोई individuality है and ना ही emotional depth because the film is too busy impressing the past. The stakes in these types of film also feels fake because you know कि फिल्म की प्रायोरिटी कहानी कहना नहीं है, rather पुरानी फिल्म की मेमोरी को रिक्रिएट करना है. So everything becomes safe and just grand in scale. एंड फिल्म के VFX तो आपने देख ही लिए होंगे, सो यू नो फिल्म कितनी ग्रैंड होने वाली है. एंड रिमेंबर, सेफ सिनेमा इज इजीली फॉरगेटेबल. बट देन व्हाट बॉर्डर 2 शुड डू टू जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस? आई नो इट्स टू लेट नाउ, बट बात करने में क्या ही जा रहा है. सो द बेस्ट बॉर्डर 2 कैन डू और दे शुड हैव डन इज टू स्टॉप ट्राइंग टू बी द बॉर्डर.
Don't copy tone shot to shot, and don't treat nostalgia like a template. Instead, make it about a new generation with new soldiers, new fears, new moral conflicts, and most importantly, with grounded storytelling and stylish action. I think they should respect the original by not impersonating it and should use nostalgia like seasoning, like just enough to add depth in the movie. But if nostalgia becomes the whole meal, then the film is not a sequel, it is just a tribute video with a theatrical release. So that's it for the video. Comment में ज़रूर बताएं which classic do you fear will be ruined next. And if you like this video analysis, please like it and share it with your friends जो nostalgia merchant है. एंड अगर आपको इसी तरह के सिनेमा एनालिसिस वीडियोस देखना पसंद है, डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे नर्डी एंड वॉच गुड फिल्म्स।